unmanned warfare or AI type of warfare where there is no human involvement or there is no human carrying a weapon and going onto the battlefield. For example, drone, for example, ship, for example, battle tank, all these are connected on a network or on a medium that I would say. A peer-to-peer network, all of them talking to each other. Talking to each other. Now, isolated from the rest of it, or are they all connected to some central systems? it can be a centralized system and local systems within. Okay. So we named it hierarchical clustering protocols. I've designed a protocol in which there is certain hierarchy and the entire hierarchy looks like a wedge. That's how the name of the company came, Flying Wedge. Okay. So Flying Wedge was one of the war tactic as well that was being used in a long time. Yes. So that's how we made this. Now, in this net-centric warfare, imagine the entire border, the tough topographies that you have in the country, where like Himalayas, Siachen, the biggest challenge was to have a network first of all, which is like you don't have optical fiber communication to be put up, you don't have LTE or some other technologies to be there. How do you do the warfare? Second biggest challenge was about getting the throughput, and the third biggest challenge was about the power requirement. You can't put up substations, traction substations across such areas, which is very tough, and your DC systems might run out of the battery in like less than few hours or a couple of days. But how do we ensure if the war is going on for months together or years now, Russia, Ukraine were 2+ years, how do we ensure such batteries come up? So there was a necessity to bring a platform. We named it a node. A node is a device that is connected to any of the element of the warfare. Like it can be soldier, it can be machine, it can be any machine, gun, tank, drone or anything. Now all of them being in a network, how do they communicate with each other? And your commander sitting in the base station some hundreds of kilometers away will be able to communicate using a secured protocol where some hacking techniques might be there, like node replication techniques, where the information, there can be a node that can be introduced into your network by an enemy where all your information can be pulled out. Similar thing happened with Hitler, right? The encrypted data. Hitler was one of the very first persons to use encryption during the World War II, and if that was decrypted, I mean, you will know the plans. Now the net-centric warfare, one way unmanned warfare reduces your human casualties, but it's a high-tech warfare where if enemy is able to crack your thing, your entire warfare is over. I mean, they will get the advantage of it. Now there is a necessity for this thing to be built up within the country and to be controlled someone by the country, and a robust system with security algorithms. So what we have done is, one is on the battery optimization part and the second one is on the security protocols part of it. I'll just give you one small security algorithm that I have implemented into this. One day I was sitting in a stadium playground and some crickets were doing a lot of sounds. Tiddy. We call it in Hindi tiddy. Tiddy. तो ये मेंढक के साथ भी है, मैंने ऑब्जर्व किया था. हाँ, तो एक अलग तरीके का साउंड कर रहे थे सब मिलके, ज़्यादा ध्यान नहीं देते जनरली. उस दिन पता नहीं मेरा ध्यान उस तरफ गया, एंड आई वाज सिटिंग अलोन फॉर सम रीजन. आई वाज थिंकिंग एंड कुछ कम्युनिकेशन वाज हैपनिंग, एंड देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद दोस lesser conscious beings. We have some language, they too have some communication codes, and एक तरह का पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व किया उसमें. अच्छा, why can't this pattern be applied? तो दो चीज़ बताता हूँ. there are many more things included into this. जैसे एक हो गया, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो, समथिंग कॉल्ड TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, जिसमें हर व्यक्ति का अपना एक अलग सा एक रूम बनाया जाता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशंस होती है. सो इफ यू डिवाइड अ फ्रेम इनटू लॉट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स, यू कैन टाइम डिवाइड कर सकते, मल्टीपल एक्सेस. नाउ सिमिलरली व्हाट वी हैव डन इज एक प्रोसेस रखा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में. फॉर एग्जांपल देयर आर 10 नोड्स. एक टैंक है, कुछ भी हो सकता है, ओवर स्प्रेड ऑफ ओवर सम 50 किलोमीटर्स. इसमें कैसे बात करेगा एक दूसरे से? फॉर एग्जांपल समबडी हैक्ड इनटू योर नेटवर्क, तो उसको फिर भी कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, उसकी पैकेट्स ड्रॉप होनी है. कैसे करेंगे आप? तो एक ऐसा बायोमिमिकिंग से लिया हुआ टेक्निक था जिसमें सब कुछ बात करेंगे और एक लीडर से बात करेंगे इन द नोड. दैट इज कॉल्ड अ क्लस्टर हेड. अब वो क्लस्टर हेड कौन है, क्या है, रैंडमली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स चेंज होते रहेगा. वी हैव गिवन सम एल्गोरिथम्स लाइक फुजी लॉजिक्स, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्टेशन से लेके
पावर रेसिडुअल एनर्जी लेफ्ट, इसके ऊपर कई एल्गोरिदम्स हमने बनाए हैं. सो इट कीप्स चेंजिंग द लीडर. तो ये जो मॉलिशियस नोड एंटर होता है उनको पता नहीं होता है कि किसको रिपोर्ट करूं मैं, तो रैंडमली इट कीप्स सेंडिंग द पैकेट्स. तो नेटवर्क को पता चल जाएगा ये आउटसाइडर आए हैं, तो इट विल ड्रॉप द पैकेट इमीडिएटली. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग. सेकंड थिंग, द सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑप्टिमाइजिंग द बैटरी. जैसे सब एक बार बात करेंगे उसके बाद रुक जाएंगे, तो जो बाहर से आया वो बकबक करते रहेगा, पकड़ा जाएगा. तो ही डजंट नो द टाइम, ही डजंट नो व्हेन टू रिस्पॉन्ड. और पूरा एकदम आप फोन्स में देखे होंगे ना, जैसे फोन्स में एक स्लीप मोड होता है, सब स्लीप मोड में होती है until some detection happens. फॉर एग्जांपल ए सेंसर, मैंने ग्राउंड सेंसर लगा दिया, प्रेशर सेंसर, अनलेस देयर इज सम इंट्रूजन, कोई चल के आया उस पर पैर दबाया तभी वो एक्टिवेट होता है, तब तक स्लीप मोड में होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स. लाइट सारी ऐसे ही काम सिंपल करती हैं सिंपल आजकल, वेरी सब सिंपल. smart सो lighting. हाँ, वैसा हमने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसमें सब एकदम स्लीप मोड में होता है. जैसे ठक करके एक जगह से डिटेक्ट हो गया, एवरीथिंग विल नॉट स्विच ऑन. जो राउटिंग एल्गोरिथम है, प्रोटोकॉल है, उसी रूट में जाएगा. एंड वी आर ऑप्टिमाइजिंग द कंप्लीट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, कंप्लीट पावर रिक्वायरमेंट. तो हमने ऐसा नोड बनाया जो 30 दिन तक चला, 2 दिन से लेके. एंड दिस वाज प्रूवन बाय आर्म On the फोर्सेस. same battery which would perhaps last a few hours or so. Oh, it's not even very big. That is somewhere about. एक ड्रोन का हमने लगाए थे बैटरी, एंड सही कई सेंसर सिस्टम्स के लिए लगाए थे. It went on till 30 to 32 days if I'm not wrong, and that was less than 10,000 mAh. Nothing very big, very small battery, camouflage system kept within the ground. वो एक ब्रेक थ्रू था. एंड सो सच नोड्स जितना भी होता है, Patented? इट्स पेटेंटेड. And in these patents, can international companies, I don't know, in defense, can they break it? Can they steal things from what you've done? Can these patents, because when filing a patent you have to disclose a lot of information. करेक्ट. सो वी आर नॉट फाइलिंग इट एनीवेयर. एंड मेरे को ऐसा शौक नहीं कि ऐसा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होता है वो जाके बाहर यूएस को बेचे, यूरोप को बेचे, बहुत सारा खूब सारा पैसा बनाए. But patent का तो मतलब यही हुआ ना, unless you're only filing in India. बट जब तक हम उनको सोर्स कोड देंगे ही नहीं, जब तक हम उनको एल्गोरिदम बताएंगे ही नहीं, तो इफ दे themselves will do it, I don't have a problem. But I myself will not go and file a patent there where I use all my things that can be used for their own state's benefit. So I do not do that. I am giving only to Indian Armed Forces and nobody else. But yes, if you are talking about certain hardware things like some devices like drones, aircrafts, I am okay to sell them to another countries. But something sophisticated like this, where my blood and soul has gone into developing something for the country, will stay only with the country and will not go out.